Hello, hi guys, welcome back to LawGiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So, CLAT आने वाला है and this is the video for you, a letter to LawGirians by me. So, first of all the best for CLAT. You might be thinking that I have left this topic, I'm weak in this section or sections or topics, or I could have done this better. The sample paper was a bit difficult. क्या होगा एग्जाम में अगर ऐसा आ गया तो मैं क्या करूँगा, करंट अफेयर्स में कुछ अजीब सा आ गया तो क्या होगा, लीगल रीजनिंग में क्या आएगा. I'm an average student. Do I have the ability to crack CLAT? But am I intelligent enough? Will I get admission in an NLU? What if I do not get admission in an NLU? What would my future be like? What will my parents say, relatives, neighbors? What if so and so clears the exam? What if I am not able to? What would happen? All of the above thoughts are negative thoughts that are going to create fear, anxiety, worry, tension, instability. I would say immediately stop thinking all of these thoughts, because even you know that if you stay calm and stop thinking about all this and just try to imagine you solving questions in the exam correctly, that you know in the exam you're solving them. If you give that vision to yourself, I think that is going to help you. The truth is, you can't bring the lost time back, but you should also not make things at hand worse by thinking about the past or mistakes that you committed. For example, one might think कि यार अगर मैंने तब पढ़ लिया होता ना, अगर मैंने सीरियसली लिया होता तो आज मेरी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होती, मैं टाइम वेस्ट नहीं किया होता, या ये नहीं होता, या फिर मेरी फैमिली में ये इशू ना आया होता. बट जो चला गया वो तो चला गया ना. जो अभी हमारे पास आने वाला है, या जो ये टाइम है, अगर हम इसके अंदर सही चीज़ें कर लें तो शायद आने वाले टाइम को भी सही कर पाएँ. बट हाँ, पास्ट के बारे में सोच कर प्रेजेंट को रियून करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है. सो थिंकिंग अबाउट योर पास्ट मिस्टेक्स दैट यू कमिटेड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, और व्हाट बेटर यू कुड हैव डन टू प्रिपेयर वेल फॉर क्लैट. बिकॉज हमें हमेशा लगता है दैट हम ना परफेक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट आई थिंक कभी भी परफेक्ट प्रिपरेशन होती ही नहीं है. हमें अगर और दिन मिल जाएंगे, हमें लगेगा ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं. जो हमने पढ़ा है उसी में से वो केओस के अंदर से ही प्रिपरेशन का जो हमने करा है उसमें से ही हमें पेपर होता है क्लियर भी. बच्चों का उसी में से होता है, राइट. कभी भी किसी की परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं होती. अगर आज बोल दिया जाए कि यार इतने दिन और दे दिए जाते तो हमें लगता है कि हाँ अभी और पढ़ लेते हैं. तो what you should do right now: thinking right, strong, courageous, peaceful. I mean, these words should be your vocabulary right now. That is strong, courageous, peaceful. Thoughts that make you strong and calm in your head. What are these thoughts? What can be these thoughts? I'm going to give my 100%. Visualize yourself giving the exam very calmly, very peacefully, and think that जो मुझे questions आते हैं ना, tell yourself that the questions of which I know the answer are there in the exam. I mean, this is going to give you calmness. Not thinking about the past or your mistakes. जो हो गया वो हो गया. आपने एक question पढ़ा, एक chapter पढ़ा, कुछ sections पढ़े, सभी पढ़े, 1 month पढ़ा, 15 days पढ़ा, 1 day पढ़ा, whatever you know, you're going with it and you have to give your 100%. And taking right decisions during the exam is very very important. मैंने बहुत बार देखा है बच्चों की द परफेक्ट प्रिपरेशन होती है, जो मेरे अकॉर्डिंग मतलब कि हाँ ठीक है पढ़ लिया इस बच्चे ने, प्रैक्टिस कर ली है, बट एग्जाम के अंदर क्योंकि वो कामली नहीं जाते वो मेस अप कर देते हैं. तो टेकिंग राइट डिसीजंस इन द एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नीड टू टेल योर सेल्फ दैट आई डिजर्व द बेस्ट. येस, यू डिजर्व इट. डोंट टेल योर सेल्फ दैट यू आर एवरेज, अरे मैंने तो जिंदगी में कुछ पाया ही नहीं है, मुझसे क्या होगा. Don't give yourself this talk. Tell yourself जो होगा अच्छा होगा. And if you can tell yourself I deserve admission in an NLU, I got to get it, I will get it, then that is something really good for you. What stops us from thinking positive? कि हमें लगता है कि यार अगर हम सोच लेंगे ना कि हो गया और नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा. देखो दुख तो होगा ही, अगर नहीं होगा तो दुख होगा. Obviously we need to learn, till 12th we don't see that much of failure. First के बाद second में हो जाते हैं, second के बाद third में, third के बाद fourth में, एंड ऐसे ही चलती रहती है ज़िंदगी. 12th के आकर एक ब्रेक लगती है जहाँ पर हमें कुछ करना होता है और फिर हमें आगे मिलता है एडमिशन. नहीं तो हमेशा एक क्लास के बाद दूसरी में जैसे तैसे पहुँच ही जाते हैं, चाहे फर्स्ट आए चाहे लास्ट आए, क्लास में एडमिशन तो मिल ही जाता है, राइट. बट ये फर्स्ट टाइम होता है जब हमें सक्सेस और फेलियर इतनी क्लोजली देखना होता है, राइट. एंड जब हम फेलियर देखते हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से सक्सेस देखोगे, फेलियर देखोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई यहाँ पर.
आप गिरकर उठोगे, चलोगे, एंड यू विल गेट अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, राइट? बट हाँ, अभी जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सामने खड़ी है वो है कि क्लैट का एग्जाम देना है, तो वो अच्छे से दो, राइट? तो क्या करना है, पॉजिटिव सोचना है, बट दीज थॉट्स र्यून दी डे मोर। कौन से वाले? जो नेगेटिव थॉट्स है। इमेजिन बीइंग एंग्शियस एंड गिविंग द एग्जाम। मैं आपको दो सिचुएशंस दे रही हूँ। एक सिचुएशन में आप एंग्जाइटी, एंग्शियस हो, वरी हो रही है, होगा नहीं होगा, पूरी टेंशन से जा रहे हो, बैठे हो वहाँ पे टेंशन से, और एग्जाम दे रहे हो। ऑब्वियसली आप वहाँ पर अपने आप को -10 कर दो, वो वरी और काम नहीं होने की वजह से। और एक पर्सन है जो बिल्कुल काम नहीं जा रहा है, वो कह रहे हैं यार जो होगा ना देखी जाएगा, मेरे को तो बस पेपर देख कर आना है, जो मुझे आता है मैं सॉल्व करके आ जाऊंगा, जो नहीं आता वो ठीक है ना, बस सिंपल। तो ऑब्वियसली कौन बेटर, किसका बेटर पेपर होगा? ऑब्वियसली जो कामली जा रहा है, चाहे उसने कुछ ज़्यादा पढ़ा भी नहीं, वो फिर भी वहाँ पे +10 +20 मतलब अपने पूरे स्कोर में कर आएगा। ऑब्वियसली यू नो द आंसर, यू नो व्हेन आई आस्क यू द क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, एंड यू नो द आंसर कि भाई अगर कामली जाओगे एग्जाम देने, एग्जाम में काम, करेज और स्ट्रेंथ से बैठोगे तो वो बेटर होगा। Let's make sure that you stop thinking about what could be done and instead think about what should be done and what can be done. Make sure that you remind this whenever you get a negative thought or whenever you are about to, you're not feeling right. ठीक है, तो वो जो affirmations मैंने अभी बोली, that I am going to give my 100%, I deserve admission in NLU, I will, you know, visualizing yourself that you're sitting calmly and attempting the questions of which you know the answer, टेकिंग राइट डिसीजंस ड्यूरिंग द एग्जाम। तो ये अपने आप को बोलो, ठीक है ना, कि हाँ यार जो मेरे को अपना 100% देना है, मुझे पता है कि कामनेस और स्ट्रेंथ, डोंट यूज द वर्ड एंग्जाइटी वरी, जस्ट यूज द वर्ड्स करेज, स्ट्रेंथ। ओके, राइट इट डाउन एवरी मॉर्निंग। आई मीन यू कैन राइट इट डाउन, आई कैन राइट दोज अफर्मेशंस फॉर यू ऑल्सो, और यू कैन क्रिएट योर ओन वर्डिंग्स कि क्या अपने आप को बताने वाले हो। कॉमेंट सेक्शन में भी आप शेयर कर जा सकते हो, आई विल ऐड टू इट फॉर यू कि हाँ ये भी सोच सकते हैं, या ये सोच रहे हो, या फिर आप कुछ सोच रहे हो एंड उसके अंदर आप चाहते हो कि आई शुड टेल व्हाट यू शुड डू, यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन, राइट? यू कैन ऑल्सो क्लोज योर आईज, ट्राई टू फोकस इन बिटवीन योर फोरहेड एंड मेडिटेट ऑन दीज 4 to 5 एफर्मेशंस। कौन सी? कि मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं कामली एग्जाम दे रहा हूँ, मैं करेक्ट, मेरे को जो क्वेश्चन आते हैं वही एग्जाम में आए हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू कैन टेल योरसेल्फ अगेन, आई एम स्ट्रांग इनफ टू give my 100%. Remember, you are a loggerin and you have to give your best. You can give that by giving your 100%. For me, you are a winner if you give the exam calmly. Attempt all the questions that you know correctly. You can watch my video how to attempt. I've done a video जिसके अंदर मैंने negative marking के बारे में बात करी है, sequence order in which you should attempt the sections, time you should give to each section. Remember, calm can keep you guilt free for life. I mean, अगर आप calmly और अपना 100% दे के आओगे ना, आपको guilt feel नहीं होगा क्लैट के नाम पे कि यार कर सकते थे पर करा नहीं। अगर आप ऑन दी डे अपना 100% देकर आते हो तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें लर्न कर आओगे फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, होता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं होता तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत सारी लर्निंग मिल जाएगी। सो येस, हाउस द जोश एंड व्हाट वन थिंग दैट यू विल रिमेंबर फ्रॉम दिस video, write down in the comment section below. I would love to read it. Do come back and write down about your experience, that how was the exam, how we helped you, how LawGiri helped. You can also message me on Instagram, that is at @IamLawGiri. For more motivational videos, you can check the description box. I'm going to add all the videos that I've done till date, which can help you with motivation. In how to attempt video also, I have done a lot. I've talked a lot about mindset. You can watch that also. All the links are going to be in the description box. That's it, guys. All the very best. And I hope आप अपना 100% देकर आओ. I'm going to send all the good vibes to you on the day. Always, I try to do that. And yeah, that's it. LawGiri signing off. Do subscribe to the channel because I'm also going to help you as when you become a law student. And yeah, even if you're not able to crack CLAT, we have other exams and I'm going to help you with the preparation of those exams as well. And if you clear CLAT, then as a law student, I'm going to help you. So do subscribe to the channel. And yeah, as a true loggerin, give your 100%. That's it. Bye bye. Take care. All the very best.